गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के बारे में। सीयूईटी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कंडक्टेड बाय एनटीए, दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी तक तकरीबन 10 लाख बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया है। इंडिया के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सबसे बेहतर है वो इस एग्जाम का हिस्सा है एंड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई टू एनी कोर्स दैट दे विश टू गो इन फॉर। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, जामिया में पढ़ना चाहते हैं, आप जहां पर भी पढ़ना चाहते हैं, CUET is one examination that all of you need to write and take. More importantly, there are बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं है। इफ यू लुक एट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 6th है, ठीक है, एंड इट ऑफर्स ओनली मास्टर्स प्रोग्राम्स। अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज कोर्सेज करने हैं तो ये जो सामने लिस्ट दिख रही है, शायद लोगों को पता नहीं होगा कि जेएनयू ऑफर्स वंडरफुल लैंग्वेज कोर्सेज, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। फिर आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन, established by रविंद्रनाथ टैगोर. It is extremely famous for mass communication courses. So बच्चे जहां पर भी जाना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं, CUET is one answer to all their queries. Very importantly, let's say if I want to pursue music, if I want to pursue dance, if I want to pursue drama, if I want to pursue painting and sculpting, for example, if I want to pursue painting and sculpting, मैं कहाँ पर जाकर पढ़ाई करूँ? A beautiful answer to this question is BHU. BHU offers a great program in painting and sculpting, a 4-year degree program, wherein students wherein they want to study, they can go in. Okay. If I want to do an integrated BA plus B.Ed program, where do I go down to? I go down to the Central University of South Bihar, which offers a 4-year integrated program along with B.Ed. So the options that CUET opens for the students are immense. तकरीबन आज के डेट में 80 कॉलेजेस हैं जो CUET के माध्यम से बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। 80 यूनिवर्सिटीज हैं और तकरीबन इन हर एक यूनिवर्सिटी में देयर आर ऑलमोस्ट 15 to 20 courses, that degree courses that these colleges are offering. Okay, so if I multiply, the students have the option of picking up from 1500 degree courses, which is a great number. So one, when we are trying to understand CUET, is at this stage of my career we are driven by what our parents want, what possibly our friends or peers are doing, and then there is also something that I want to do. CUET gives me an option to choose courses, one, that my parents want to me to pursue my graduation in, something that my friends are saying that they would do a graduation in, and third is what I would like to do a graduation. और फिर मेरे पास वो ऑप्शंस है, रिजल्ट्स आएंगे, I choose which is the best course, which is the best college that I am being offered a choice in. Based on that choice, I'll move ahead. So this is one solution to a lot of problems. Now let's try understanding this. Why is CUET good? So to begin with, we look at from the perspective of Delhi University. Now, Delhi University इसलिए famous है क्योंकि if you look at Lady Shriram, if you look at SRCC, the salary packages, they go at somewhere around 7.5 lakhs per annum. The highest salary in some of the years has gone down to 37 lakhs per annum. Now this is, if we look at the highest salaries, it is comparable to top MBA colleges, the best engineering colleges, so on and so forth. 7.5 lakhs per annum. If we look at decent engineering colleges, there also the average salary is 7.5 lakhs per annum. So if I'm looking at, if I'm aspiring to go for Delhi University, CUET today, from this year onwards, CUET is the answer. पहले क्या होता था, बच्चों को फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ 100% मार्क्स, एक झारखंड बोर्ड का बच्चा या एक तमिलनाडु बोर्ड का बच्चा जिसको मैक्सिमम 80% नंबर आते थे, वो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ ही नहीं सकता था। और हर एक स्टेट बोर्ड की अपनी मार्किंग स्कीम होती है, सीबीएसई की अपनी एक मार्किंग स्कीम है, आईसीएसई की अपनी एक मार्किंग स्कीम है, केरला स्टेट बोर्ड की अपनी एक मार्किंग स्कीम है, यूपी बोर्ड की अलग मार्किंग स्कीम है। बच्चे इक्वली टैलेंटेड है,
बट मार्किंग स्कीम अलग अलग होने के कारण there were some students who were benefited more and some students who were benefited less. To correct all this, we have CUET coming into the picture. अगर आप देखेंगे LSR, the average salaries that we are talking about is 37.8 lakhs per annum. हंस का आज 31 lakhs per annum. कौन नहीं चाहेगा जाने के लिए? But class 12th की differential marking scheme is creating a barrier. Even before I have started preparing for it, even before I can dream of it, I know I cannot qualify for the same because uski cutoff ja rahi hai 100% marks. To give you a perspective, try understanding this. Hindu College for BCom honors, 99.25 is the cutoff, first list cutoff. If I look at LSR, Lady Sriram, it is 99.75. So and even for an above average student or for a very good student, aiming for 99.75 is technically not possible. 90% marks. So CUET now यहाँ पर जो आ रहा है, ये कह रहा है बच्चे आप अच्छे हैं, आप एक नेशनलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम लीजिए, सारे लोगों के लिए एक ही टेस्ट होएगा और आपकी जो स्कोर होगी उसी के बेसिस पर हम लोग आपको सेलेक्ट करेंगे. तो अब ये फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चे ने कहां से अपनी क्लास 12th करी है, किस स्टेट बोर्ड से करी है, किस सेंटर CBSE से करी है या ICSE से करी है, आप कहीं से भी अपनी ग्रेजुएशन करें, ठीक है. CUET आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहा है to choose your college. Okay, now जो काम की चीजें यहां पर जो मैं कह रहा था, in addition to giving you a common platform, it is also giving you directions in which you can dream. If I'm looking at all of you, should I be looking at a career that is 3 years down the line, or when I'm planning my career, should I be looking at 2050? The answer is मेरी इस डिग्री का वैल्यू 2050 में कितना होगा, इस बिकॉज आप लोग तब तक 50 साल के होंगे. अग्रीड. सो अगर मैं 50 साल का हूं और उस समय दैट विल बी एट माय पीक ऑफ माय करियर, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि संदीपन यू आर ओनली अ ग्रेजुएट. सो व्हेन आई एम प्लानिंग माय करियर टुडे, I think all of you have to look at a bachelor's program one, along with that added to it a master's program. Now there are wonderful universities in India which offer master programs. If you look at the University of Tezpur in Assam, it is one of the upcoming central universities in our country, followed by the University of Hyderabad. They offer 5-year integrated bachelor's plus master's programs. I'm sure none of you would have heard of the English and Foreign Languages University. So it definitely does teach English, but if I want to learn Spanish, Italian, German, French, any of these courses. So along with DU, this is one place where you can look into to study foreign languages. Now we'll try to have an understanding of what kind of courses that some of these universities run. Okay, so to begin with, JNU. If I want to study a bachelor's program at JNU, okay, now try understanding this. JNU is famous for language courses. Okay, one, language courses. Now look at the seat intake, 1939-48. Now, in any of the department, there would at least be 10 faculties, 10 teachers, 10 teachers to honge honge. The student-teacher ratio is 2:1. If I want to study com science, is JNU an answer? Yes. If I want to study a BTech in electronics communication engineering, or even if I want to study a master's, if I want to do my master's in humanities, is JNU the answer? The answer is yes. I want to study Ayurveda. There might be someone who wants to study an Ayurveda. JNU is still the answer. Beauty with JNU, when I look, National Institutional Ranking Framework 2. So should I look ahead for JNU? If it fits into my domain, the answer is yes. Let's look at another option. University of Hyderabad that I was talking about. Now, if you look at, I want to go in for applied zoology, health psychology. Now, these are new age courses that we talk in terms of. Sociology, anthropology is one discipline that बहुत सारे बच्चे लेते हैं who are preparing for UPSC. If I'm doing a master's in anthropology, makes a lot of sense. Physics, mathematical sciences. Now look at the seat intake. 20 बच्चे हैं, 5 साल का प्रोग्राम है, bachelor's plus masters. करना चाहिए. If you are interested, the answer is yes. Okay. Now, so when we come down to CUET, what we need to understand is आज के डेट में 80 यूनिवर्सिटीज है,
ठीक है, तकरीबन 1.8 लाख सीट्स है। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अक्रॉस 13 लैंग्वेजेस। बोर्ड मार्क्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, बोर्ड मार्क्स आपको पास करना है। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं बोलूं कि इफ आई स्कोर्ड 75% मार्क्स, 80% मार्क्स अबव, आई शुड बी कंटेंट। मेरी रेस 99 लाने की नहीं है। फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन CUET, ऑल ऑफ यू कैन log on to cuet.samarth.ac.in. It has all the details, all the relevant information related to the examination. Okay? सारे एग्जाम्स हैं जो भी हैं, क्लास 12th बोर्ड्स या स्टेट बोर्ड्स, उनका वेटेज अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। Okay, now look at the structure of the CUET examination. Now, CUET examination will be in 3 sections. Section 1 is the language section. Section 2 or section B that we are talking in terms of is the domain-based subjects. Domain-based subjects दो हैं that you have studied in class 12. अब देखेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, to understand, B1 जो है वो कोर्सेज होते हैं जो नॉर्मली हर एक स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, B2 में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो न्यू एज कोर्सेज हैं। बहुत सारे स्कूलों में शायद ये नहीं पढ़ाए जाते, बट यू कैन ऑब्वियसली चूज many of these subjects which are there in B1, and if there are some subjects are there in B2 as well, you can choose them as well. But B1 accounts, biology, business studies, chemistry, computer science, ये सारे के सारे जो domain based subjects हैं, ये सारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। Section C is primarily an optional subject and based on the course that you are applying to, the general aptitude test class 8-9 level की जो basic maths होती है उसके questions रहेंगे, English के questions रहेंगे, basic reasoning और GK के questions रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं झारखंड से हूं, मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैं अपने लैंग्वेज सेक्शंस में मैं इंग्लिश या हिंदी ले लूंगा। अगर मैं कैलकाटा का हूं तो मेरे पास बंगाली का ऑप्शन है, अगर मैं बंगाली में टेस्ट लेना चाहता हूं मैं बंगाली में टेस्ट ले सकता हूं। लैंग्वेज सेक्शन मैंडेटरी है ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए, हर कोर्स के लिए ऑलमोस्ट। फिर आते हैं डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट्स। डिपेंडिंग ऑन द कोर्स दैट आई एम अप्लाइंग टू, I'll choose and based on the university criteria. अब हमें एक बात काम की समझने की है कि हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स का जो रिक्वायरमेंट है वाया CUET डिफरेंट है। तो जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर मैं बीकॉम देखूं उसकी क्राइटेरिया थोड़ी अलग है, अगर मैं BHU का बीकॉम देखूं तो उसकी क्राइटेरिया थोड़ी अलग है। ठीक है, when you are filling the form, you just need to be careful about what are the examinations that I am filling the form for. For example, I'll try to show you a list, but prior to that, let's stick to CUET for some time. Now, CUET का examination जैसे हम लोगों ने कहा, section 1, section 2 और section 3. Section 1 language based paper रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मैक्सिमम उसमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट्स का पेपर। सेक्शन 2 डोमेन बेस्ड है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट्स का पेपर है, MCQ बेस्ड है। सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड है, 1 घंटे का है, 75 क्वेश्चन रहेंगे, आपको मैक्सिमम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, नाउ पेपर 2 हिस्सों में होगा। स्लॉट 1 मॉर्निंग स्लॉट है, स्लॉट 2 आफ्टरनून स्लॉट है। स्लॉट 1 इज एक लैंग्वेज का पेपर आप ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट बेस्ड या डोमेन बेस्ड पेपर्स ले सकते हैं और जनरल एबिलिटी का पेपर मॉर्निंग स्लॉट पे रहेगा। सेक्शन 2 4 डोमेन बेस्ड पेपर है, प्लस जिन बच्चों ने ऑप्शनल लैंग्वेज के लिए ऑप्ट किया है उनके लिए स्लॉट 2 में वो पेपर रहेगा। ओके, दिस इज द कैटेगराइजेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, B1 और B2. B1 is normally courses that are taught in all schools. B2 are those which are the new age courses. Okay, now let's try understanding it further. When we are looking at this is Delhi University admissions. Now we'll try to understand Delhi University admissions BA honors program. Let's say I'm a class 12 science student.
I'll choose one language from section 1 and at least 3 subjects from section 2. Okay? Now, the more important part is, provided I have studied those subjects in class 12. So let's say अगर मैंने physics, chemistry, maths, English और let's say physical education मेरा पेपर रहा है, ठीक है, और मुझे English honors के लिए अप्लाई करना है, I'll still have to write the paper in English 1 plus physics, chemistry, maths or physical education depending on how I fit it in. इसका ये मतलब नहीं, अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या इवन फॉर दैट मैटर जर्नलिज्म, इट वुड बी टेक्निकली इंग्लिश प्लस बेस्ट 3 स्कोर्स इन द CUET एग्जामिनेशन ऑफ द डोमेन बेस्ड पेपर्स. ठीक है, अगर ये एक एग्जांपल लेता हूँ, देयर इज इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन. ठीक है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन ये कहता है कि आपको एक इंग्लिश का पेपर लेना है, एक लैंग्वेज बेस्ड पेपर लेना है, एक आपको सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 या डोमेन बेस्ड सेक्शन जो है उसको, उसमें आपको मास मीडिया का पेपर लेना ही लेना है प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है. ठीक है, इफ आई एम गोइंग इन फॉर अ BSc प्रोग्राम, इट इज सेइंग मेरे लिए लैंग्वेज पेपर, मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए 30% मार्क्स, और मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर कंपल्सरीली लेना है. Okay, if I'm going in for a BSc program. Similarly, if I'm going for a vocational program at DU, ठीक है, I need to choose one paper from the languages section. Mathematics मुझे definitely लेना होगा plus any 2 subjects. Okay, from the domain based sections. अगर मैं domain based section नहीं लेना चाह रहा हूं तो मुझे any language paper plus mathematics plus general aptitude test वो लेना होगा. If I'm looking at a BCom honors, अगर मैं क्लास 12 में मेरी कॉमर्स रही है तो मुझे लैंग्वेज पेपर लेना है, अकाउंटेंसी लेना है प्लस 2 सब्जेक्ट. ठीक है, अगर मैं साइंस स्टूडेंट हूं जो कॉमर्स में मूव करना चाह रहा है, मुझे लैंग्वेज पेपर लेना होगा, मैथमेटिक्स लेना होगा प्लस 2 सब्जेक्ट्स. ओके, अगर मुझे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, शहीद सुखदेव कॉलेज है, वहां से अगर मुझे BBA करना है या BBE करना है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करनी है, I'll go for one language paper, mathematics, general aptitude test. ठीक है, उसी तरह इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे. सो वी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हर एक कॉलेज की, हर एक कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग है. तो जब हम लोग CUET का फॉर्म भरेंगे, बहुत ध्यान से भरेंगे, समय लेकर भरेंगे, ताकि हमारी जो भी चॉइसेस हैं वो हमारे एग्जाम्स जो हम दे रहे हैं उसके थ्रू कवर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही है डायरेक्टली फॉर इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम. English from list A, any student who is going for, so whether it be a science student or an art student or a commerce student, any subject English from list A, any 2 subjects from list B1 plus any 1 subject either from list B1 or B2 depending on whether I have studied those subjects in my class 12th. Okay, now let's look at another beautiful college, TIS, that is Tata Institute of Social Sciences. When I'm looking at TIS, so TIS is famous across the country for its social work programs. So if I want to become a social activist, I want to become a social entrepreneur, I want to work for the society, so this is one course or career that I can look up to. It provides wonderful 4-year degree programs. Now, if you look at the requirement here, so इसे आपको दिखाने का ये मतलब था कि look, the requirement that out is no domain based paper. We are simply talking in terms of the English language, which is compulsory, plus the general aptitude test. Okay, now this is a screenshot from the CUET website, is cuet.samarth.ac.in. Okay, now if you look at the options that you have, okay, you want to do a BTech in dairy technology, if you fulfill the criteria, yes, that option is available for you. I want to study tabla, sitar, violin, dance, bharatnatyam, whatever. I want to do a BA in Shastri. ठीक है, मैं आगे चलकर अपने करियर को एक पंडित के रूप में देख रहा हूं और मुझे पूजा करना है आगे चलकर. Is there a course for me? The answer is yes. So once you browse through the CUET's website, we see immense possibilities coming at our doorstep.
Okay, now what I was talking in terms of Central University of South Bihar, ठीक है, it offers 4 years integrated programs, a BA B.Ed program, a BSc B.Ed program. You want to do BA LLB, 5-year BA plus LLB. So it is not only after graduation, but 5 years integrated programs via the central universities is also possible. Okay, so what we need to do, CUET की जो डेट है वो 22 मई तक एक्सटेंड हो गई है, ठीक है. For all those of you who are interested, this is one examination that you should not miss, ठीक है. It's in its first level, जो डोमेन बेस्ड पेपर रहेगा उसकी जो सिलेबस है वो प्योरली क्लास 12th की एनसीईआरटी की सिलेबस है. उसमें क्लास 11th का के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. So all of you look up to CUET, start preparing for CUET, and any further questions that you have with regard to CUET, do put it down in the comment box. We will love to answer most of your questions. हाँ, एक जरूरी चीज कि क्या हम बोर्ड एग्जाम्स अब एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज एक तो एग्जाम हो गया मेरा ग्रेजुएशन, बट मैं कहीं पर भी नौकरी करने जाता हूँ, आगे चल के बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करूंगा, कहीं पे भी अप्लाई करूंगा, मेरी जीडी इंटरव्यू में अगर मेरे को 90% मार्क्स आ रहे हैं या 80% मार्क्स आ रहा है क्लास 12 में, वो मेरे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को एक अच्छा खासा वजन देता है, ठीक है. तो इस सीयूईटी का ये मतलब नहीं है कि मैं क्लास 12 में 50% 40% मार्क्स से भी खुश हो जाऊं. आई स्टिल हैव टू ट्राई फॉर एटलीस्ट 80 प्लस 90 प्लस आ गया तो सबसे अच्छा है. हाँ, अब इससे ये फायदा है कि मुझे 99 करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना, वो जो है ये इसका सबसे बढ़िया फायदा है. ओके, so with this I'll end the session for here. Any questions that you have, feel free to ask in the comment box, and rest assured most of your questions will be answered. Thank you.